girls, how are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today. So today I'm gonna share with you not one, not two, not even five. I think it's more than 7 ways that you can use your serums. Seriously, this much serums. And each of them have a different purpose. You really need this much serums? I'm gonna let you know. बहुत से तरीकों से आप सिर्फ एक तरीके से आप सीरम अपने चेहरे को whitening या moisturizing करने के लिए यूज नहीं करते. There are so many ways that you can put your serum. So that's how, or that's way you can get more benefits from your money. मतलब आजकल अगर सख्त बरसात अगर लगी हुई है तो trust me, hyaluronic acid is the best way to use आजकल के सीजन में या आजकल के टाइम में, because hyaluronic acid is a humectant. वो क्या करता है, आपके इर्द गिर्द के माहौल से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है. अगर आप बहुत ज्यादा गर्मी में या बहुत ज्यादा ठंड में उसको यूज कर रहे हैं और आपके इर्द गिर्द माहौल में उतना मॉइस्चर नहीं है, तो hyaluronic acid आपको वो बेनिफिट नहीं दे सकेगा. सो दिस इज द राइट टाइम टू यूज hyaluronic acid. आई हैव अ कंप्लीट वीडियो ऑन रिवाज यूके 3 सीरम्स, जिसमें hyaluronic acid है, एक्ने के लिए सीरम है और विटामिन सी सीरम है. ठीक है, नाउ आई एम गोना लेट यू नो what are the rest of the ways that you can use your serums.
let you know in a different video what is the difference between all these four liquid treatments that you can apply on your face. So this is a wrap. This is the end of my video where you can watch these videos and enjoy and let you know more about serums. So thanks for watching, guys. Bye.